इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ एनपीएस गर्व का अनुभव भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन की तरह देश और विदेश की आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। जी धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Vishal and Siddharth. Welcome to the program. Good evening. A quick look at the headlines. Benchmark indices end at fresh record highs. Sensex settles at 74,119. Nifty near 22,500. Union Minister Ashwini Vaishnaw says government to focus on manufacturing in the next 5 years as it has huge employment potential. And India will have 100% efficient green ports in the next 5 years, says Ports, Shipping and Waterways Secretary T.K. Ramachandran. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सेंसेक्स 74,119 पर हुआ बंद। निफ्टी 22,500 के नजदीक पहुंचा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा अगले 5 वर्षों में सरकार का फोकस विनिर्माण क्षेत्र में रहेगा। रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं। और पत्तन पोत परिवहन तथा जलमार्ग सचिव टी.के. रामचंद्रन ने कहा देश में अगले 5 वर्षों में 100% कुशल ग्रीन पोर्ट्स होंगे। शुरुआत कार्यक्रम की शेयर बाजार से करते हैं। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुए। मेटल और एफएमसीजी शेयरों में तेजी के बाद शेयर बाजारों में ये बढ़त दर्ज हुई। उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.05% की वृद्धि से 33 अंक बढ़कर 74,119 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19.5 अंक की वृद्धि से 22,494 पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान निफ्टी ने आज पहली बार 22,500 के स्तर को भी पार किया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.4% की तेजी दर्ज हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.7% का उछाल आया। साथ ही साथ अब विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 82 रुपए 79 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स गिरावट से 103.23 के स्तर पर रहा। Some more stock market details. Benchmark indices ended at fresh record highs today following gains in metal and FMCG shares amid firm global trends and foreign fund inflows. In highly volatile trade, the 30-share BSE Sensex rose 33 points or 0.05% to close at 74,119. NSE Nifty 50 settled 19.5 points or 0.1% up at 22,494. During the day, it surpassed 22,500 level for the first time. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 20 companies appreciated, while those of 10 companies declined. Among the Sensex firms, Tata Steel, JSW Steel, Tata Motors, Bajaj Finserv and Asian Paints were the major gainers. On the other hand, Mahindra & Mahindra, Reliance Industries
Axis Bank, ICICI Bank and Titan were among the laggards. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.4%, while the small-cap index jumped 0.7%. In sectoral indices at the BSE, capital goods, commodities and FMCG sectors rose over 1%. On the other hand, oil and gas and energy sectors declined over 1%. Siddharth, we have been seeing even yesterday when the market was moving up, even today, the index, it's a sectoral rise. And do you think these sectors are taking turns at it? Yeah, I think yesterday it was banking and IT. So I think basically if we will have to take this market touching new highs on a day-to-day basis, I think, and the kind of surge we have seen in last couple of years in the Indian stock market, I think it also reflects the confidence of the world, not only our own domestic investors but also people from outside India, the foreign institutional investors, and it also reflects the confidence in the larger Indian economy. And if we look at the way Indian economy has been expanding year on year, quarter on quarter, we currently are the fastest growing economy in the world. Third quarter was a surprise, 8.4%. People were expecting 7 plus, 7.5 plus, but nobody was expecting. Even all the estimates are being revised upwards, including our own central bank, all the international agencies. And if you look the way we are the size of the economy expanding, so probably also the size of the market in the same vein is also expanding after US, China, Japan. I think India is now the fourth largest, one of the largest markets. So, and the strong fundamentals, the changing nature of investors, new investors coming in the new mode of investment changing, some people coming in directly, right, and some people also coming in through the SIP route, as we have been discussing in the past also. Right. So there was a huge golden lining on small and mid caps about last month, a few months ago, especially towards the end of last year also, and everybody was saying that's the future, this is where it is, and a lot of people really moved en masse, so to say, in that direction. But we have been seeing that there is a tempering of that. Today of course there was a marginal steadying and increase, but yesterday was quite dramatic in terms of a fall. So how do you see small and mid caps weathering this? Is it temporary, and do you see that in the long run they are going to get a good bull run? See, Gaurav, if you would ask me, I think nothing has changed for them to take a beating today or yesterday or some days back. So I think overall I don't see the progression being positive, in the positive territory overall. But yes, temporary blips may come, and that is what is the nature of the market. Plus, I think when markets are at such high levels, obviously people are looking at opportunities. Sometimes it would be large cap, sometimes it would be mid cap, small cap. So, but if you look at the trajectory of the market, even small caps, even if you look at the small index, small stocks in the index large, if you would see the returns on if you were investing in a small cap mutual fund through SIP route, I think it tends to double in 5 years. So that is, and all these today's large caps are what? They are yesterday's mid caps, small caps. Right. Plus, I think some of the small caps are new businesses also. The way, the changing shape of businesses. So probably they are related to the new IT sphere plus fintech. So those kind of, changing nature of the architect of the small cap, mid cap. So I think I don't see fundamentally any issues. Any small cap, mid cap, there is certainly a structural change. There is a certain, something to worry. So I don't think, yes, there will be, and that is what people have to realize, especially the retail investors who are coming in with this thing, that intent, that if you're looking at gains to happen immediately, then I think it's a bad time for you. Right. So Vishal is really keen to ask you more questions on the stock market, but we've got the indication it's time for a short break. Listeners, stay with us. सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है।
स्वागत है आपका एक बार फिर मार्केट मंत्र में। हम चर्चा कर रहे थे शेयर बाजार के ऊपर। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें सिद्धार्थ जी, तो आज मेटल और एफएमसीजी शेयरों में तेजी देखी गई है। क्या प्रमुख वजह आप मान रहे हैं इसके पीछे? आपकी अर्थव्यवस्था जो आप तीसरी तिमाही में देखते हैं, आप देखिए तकरीबन 8.4% से जो है की रफ्तार से बढ़ अर्थव्यवस्था में ग्रोथ जो दिखी, तो आप उसका सीधा वो है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है। एफएमसीजी फास्ट मूविंग, लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है, तो वो और एफएमसीजी तो जो कभी भी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो सबसे फ्रंट लाइन स्टॉक्स होते हैं। सबसे पहले अगर कहीं भी आपको ग्रोथ दिखे, मतलब अगर ग्रोथ है, विकास दिखेगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रंट लाइन स्टॉक्स होते हैं एफएमसीजी। जहाँ तक मेटल अगेन हमारी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है सीधे। अगर आपकी हिंदुस्तान अगर 8.4 जो ग्रोथ आई थर्ड क्वार्टर, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि देयर इज़ इनहेरेंट डिमांड, आपका मैन्युफैक्चरिंग, आपका ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। तो वो दर्शाता है कि शायद वो पॉजिटिव आप जो देख रहे हैं मेटल और एफएमसीजी स्टॉक्स में। और आज ये मेटल और एफएमसीजी होगा, मुझे लगता है ब्रॉडली मार्केट जो है ना, मतलब आप उसको वो देखेंगे, हो सकता है किसी दिन कोई स्टॉक्स में ज़्यादा उछाल, किसी में कुछ गिरावट देखेंगे, बट ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री देखिए तो पॉजिटिव ही है। हो सकता है ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ फंडामेंटली कोई चेंज हुआ है जहाँ की आज बहुत ज़्यादा कोई और स्टॉक्स के लिए कोई रीज़न है। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट हमेशा कई बार एकदम फंडामेंटल को भी नहीं दर्शाता है, लेकिन जिस मार्केट में हर महीने आपके यहाँ मतलब एसआईपी तकरीबन 50 लाख 40 लाख एसआईपी के नई एसआईपी लोग जो है के रूट से लोग मार्केट में आ रहे हों, तकरीबन 10 लाख करोड़ जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड्स का, और फिर आपका उसी संख्या उसी उसमें आप देखेंगे अगर डीमैट अकाउंट्स हिंदुस्तान में 50 लाख, तकरीबन 15 लाख डीमैट अकाउंट्स हैं। तो लोगों का जो रुझान और विश्वास स्टॉक मार्केट की तरफ, हाँ ये ज़रूर है कि अब इसमें कितने लोग लंबी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कितने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, कितने लोग बढ़िया से आप जो है, आजकल क्या है कि सोशल इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है, कुछ लोग जो हमारी नई पीढ़ी है, लोग बहुत जल्दी, और अच्छा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आसान है किसी ऐप के थ्रू। पहले डीमैट अकाउंट खुलवाते थे, उसमें भी टाइम लगता था, अब वो सब करने में भी वो पूरा जो सिस्टम है वो आसान हो गया है। तो ये भी एक कारण है। I think it's very interesting, when you said that we don't know how many will be long term or medium, but also in terms of an investor's psychology, it's something, and we have a lot of young people investing. So maybe it's their process of learning to understand whether short term really doesn't work, because, all pundits and all older people who've been in there long say that, hang in there, don't get trigger happy. I think this is probably a cycle of learning that all investors will have to go through. Yeah, Gaurav, I think what you're saying is also right. It's a cycle of learning. Plus, now we don't hear so many episodes of people burning their fingers, especially the retail side. At least we don't hear so much. And the people coming through the SIP route, at least we are assured, are people who are coming through are mostly, I would assume they are coming through a long-term investment, plus they are coming through a route where somebody who's well versed in this game, right, or understands the market, is investing the money on their behalf. Plus, yes, we have on the other side the people who are doing it directly, also huge number of demat accounts. Also, I think it is also a shift in the, probably a generational shift. Our young today you have more options. You have an option of stock market. Probably 20 years back, people were very scared of the markets. They didn't have this kind of a risk appetite. People, right. My parents, even I would say, put some to large extent myself also, we would prefer to open a fixed deposit rather than go straight away in my younger days directly to the market. Today, yes, times have changed. So I think this is also a reflection of the changing times. Right. Plus, I would also add, definitely I strongly feel the chances of that kind of correction in the market, I don't see them immediately. Until unless there is some drastic big event which occurs, geopolitical event, or because I do not see in India, in terms of our macro fundamentals, we are very, very, very strong. Yes, there could be some external event which could trigger something. और अब चलते हैं वैश्विक शेयर बाजारों की तरफ। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो दक्षिण कोरिया के कोस्पी को छोड़कर आज सभी प्रमुख एशियाई शेयर बाजार गिरावट में रहे। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.23% की बढ़त के साथ ज़रूर बंद हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग 1.3% लुढ़क कर
बंद हुआ। जापान का निकेई 1.24% के नुकसान में रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% नीचे बंद हुआ और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। फ्रांस का कैक 40 0.12% ऊपर चल रहा था, जबकि जर्मनी का डेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के सपाट कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लंदन का फुट्सी 0.22% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। A look at the US market. Key US indices closed higher yesterday, and the benchmark US Treasury yields dipped to a one-month low after Federal Reserve Chair Jerome Powell reassured investors that while inflation is not quite tamed, rate cuts can be expected this year. The Dow Jones Industrial Average rose 0.2%, the S&P 500 gained 0.5%, and the Nasdaq Composite added 0.58%. Siddharth, wanting your views on the US and inflation. So, it's been quite a long story. It's been there for some time. And inflation, even when it's being handled, when it remains for some time, tends to become endemic, tends to get factored into households and budgets. You think that's happening in the US? I think so, yes. And the expectation that it would wean away or it would go away fast, I think has somewhat got subdued. But yes, now the expectation, things looking to be stabilizing, because if you look at the commodity prices also, kind of all the post-geopolitical tensions which took place, they are on. But I think the prices of crude oil, if you look at those kind of things, I think they are also stabilizing, especially, and also the food prices. So there is a build-up now that Fed would kind of cut rates in June. So I think that is looking around the corner. Yes, and inflation is something, as our own central bank governor Shaktikant Das puts it, that the last mile is the most difficult, is the part which is not the easy, is the difficult part. So I think, but overall I think things are looking to be stabilizing. Right. Moving on to our next story, IT Minister Ashwini Vaishnaw has said that the government's focus in the next 5 years will be on manufacturing, as it has huge employment potential. The minister was addressing the gathering after inaugurating the Viksit Bharat Strategy Room and Niti for States platforms at New Delhi today. He said it is indeed very satisfying that today the country has all the data collated and a platform where the best practices can be seen and compared. He emphasized that presently the country's development thinking stands on 4 pillars, which include physical, digital and social, infrastructure, inclusive development, manufacturing and simplification. He said the largest inclusive development program anywhere in the history of the world is today being implemented in India. The minister said nearly 51 crore Jan Dhan accounts have been opened in India, which is equivalent to providing benefits to the total population of Europe. He said around 11 crore gas connections were provided across the country, which is equivalent to changing the cooking behavior of Japan's population. Mr. Vaishnaw also highlighted that close to $55 billion mobile phone connections have been made available in the country. He said the country used to import 98% of mobile phones 10 years back, and today it is manufacturing and exporting 99% of mobile phones. During the event, the minister also launched Samarth training modules, which will be backed by testing mechanism to certify the competency of district and block level officials. Meanwhile, Niti Aayog CEO BVR Subramaniam said Niti for States platform is one of the vital programs which will play a fundamental role in hand-holding states. It is the largest experiment in the world where a country of this size is seeking its future as a developed nation. Siddharth, this Niti Aayog CEO, he spoke about the Niti for States platforms, and we are a federal structure and we know the center has a strong role to play, but states have to be taken along. So in terms of, and one of the core deliverers of equity is through state-run programs. So how do you see this panning out as an initiative, a strong one?
See, as the minister also pointed out, Ashwini Vaishnav, we're looking to push manufacturing over next 5 years. I think we have already started that since 2014. This government has been pursuing that strategy, and especially the event when we had problems with China, I think it got all the more accentuated. We realized that yes, we need to be a manufacturing giant, and that is how we also designed our policies towards that. We brought in special schemes like productivity linked schemes, plus as you said, the states, taking along states through Niti Aayog, building a platform. Yes, because that gives you an opportunity to kind of put in everything at one place. Where is the physical infrastructure available, where is the social infrastructure available, how is the labor situated, which Right. part of the country, what kind of industry you can take there. So in terms of people coming and looking at investing in India, obviously the central government is the first line of action. But yes, because it is, where would these manufacturing units be situated? Obviously it has to be states. Right. So then you need to work with the states, and state governments also, I think, currently are developing single window clearance mechanisms, and especially if you see states like Odisha, we have seen in recent past, we have seen huge investments coming into the state. So that way I think, and it would also add to some kind of a competition between the states. Healthy competition, Yes. absolutely. Once you Right. bring in everything at a single platform, so there is everything for everybody to see who's moving in which direction, what pace. So I think it's a healthy initiative. It's a very positive initiative, I would say. And I think in last, as the minister himself said, the way we have changed in terms of our exporting mobile phones. Right. So I think that strategy is giving us results. Right. So in this program, we are constantly for healthy competition. Time is now competing. Commercial breaks are coming in. So right now, listeners, stay with us. A short break. अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मार्केट मंत्र, और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव टीके रामचंद्रन ने कहा है कि भारत के पास अगले 5 वर्षों में 100% कुशल ग्रीन पोर्ट्स होंगे। आज दिल्ली में ग्रीन शिपिंग और पोर्ट्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रामचंद्रन ने कहा कि मंत्रालय इस उद्देश्य को पूरा करने में वैश्विक अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से आने वाले विचारों का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों और जहाज़ों के साथ साथ पूरे जलमार्ग के तंत्र को भी ग्रीन बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारत अपने कम इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक स्रोतों जैसे सौर, जल और पवन ऊर्जा की मदद से इन लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम है। श्री रामचंद्रन ने कहा कि सरकार हाइड्रोजन को तेज़ी से बढ़ने वाले वैकल्पिक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि तूतीकोरिन, कांडला और पारादीप बंदरगाहों पर जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन से जुड़ी पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। अगले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 100% कुशल ग्रीन पोर्ट्स तैयार करने का है। इसके पीछे सरकार की मंशा आपको क्या दिखाई पड़ती है? नहीं, देखिए विशाल, अगर हम लोग देखें तो जो हम रिन्यूएबल सोर्सेस है या ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो टारगेट है, सरकार ने जो टारगेट रखा हुआ है, तकरीबन 500 गीगावाट हम जो है बिजली पैदा करना चाहते हैं 2030 से, और साथ ही साथ अगले 5 सालों में हम, या 2030 तक आप कहें, हम अपना जो एनर्जी के रिसोर्सेज का जो उपयोग है वो हम 50% बाई 50% वी वांट टू शिफ्ट टू द रिन्यूएबल्स, यानी कि जो आपने बोला सौर या वायु या जल, तो उसी के, मुझे लगता है उसी डायरेक्शन में ये जो वाटरवेज सेक्रेटरी शिपिंग का जो कहना है कि हमारे जो मतलब 100% जो पोर्ट्स हैं और जो वाटर चैनल्स हैं, वाटरवेज हैं, वो जो है बाय 2030 इट विल ऑल बी ग्रीन। सो मुझे लगता है वो इसका एक डायरेक्शन है। प्लस कहीं ना कहीं हम जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको नीचे लाना चाहते हैं, और उसी के मतलब तहत आप देख रहे होंगे अभी भी कुछ दिन पहले भी एक प्रधानमंत्री की एक योजना अनाउंस हुई जिसमें आप अगर अपने घर के ऊपर भी सोलर पैनल लगाना चाहें तो वो भी उसी स्टेप में एक डायरेक्शन है। तो मुझे लगता है लार्जली ये वाटरवेज और इस सरकार का शुरू से
जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ साथ अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है तो शायद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना है, और हम समय के साथ एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ताकि और उसको नए समय के नए ज़माने के साथ उसको ग्रीन अगर हम बना रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि उससे लेस पोल्यूशन होगा. इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सोर्स, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ नॉट, वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग, वी आर नॉट मेकिंग, मतलब ना ऑन ए डेली बेसिस वी आर नॉट इनकरिंग एनी कॉस्ट ऑन दैट एक्सेप्ट सम मेंटेनेंस कॉस्ट. तो मुझे लगता है उसके तहत प्लस एक बड़ी जो उन्होंने बात कही वो हाइड्रोजन के तौर पर जो हम पायलट प्रोजेक्ट्स लाना चाहते हैं, उसको एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तरफ दुनिया में देखा जा रहा है. तो वो समय पे ही पता लगेगा कितना वो कारगर साबित होता है. राइट. अगली खबर, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी है. आज नई दिल्ली में एक निजी मीडिया कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत आने वालों और यहाँ उद्योग स्थापित करने वालों के लिए पूर्ण अवसर उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि विश्व चीन के समान विकल्प ढूंढ रहा है और भारत इस मांग को पूर्ण करना चाहता है. उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को बाहरी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने और निर्यात करने में सक्षम होने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता. श्री सिंह ने घोषणा की कि सरकार बिजली क्षेत्र में अगले 5 से 7 वर्षों में 17 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी. उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 436 गीगावाट तक पहुंच गई है और देश ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने के लिए थर्मल क्षमता जोड़ने जा रहा है. So talking, we were earlier talking about green ports, and now, of course, this is the power sector. But wanting to draw your attention and linking the power requirements with green energy, Siddharth, share with us, transitioning from the infrastructure into actual use. A lot of changes need to take place. Mechanisms and machinery needs to change, adaptability. So are we also moving along, I think, at the same pace as we are moving to green energy? But to transition that into actual consumption, long-term and sustainable, other changes in infrastructure are also required. That's happening? Yes, obviously, yes, we are working in that direction. And as we talk about, as Vishal, the story said, Vishal mentioned also a while back, so we're talking about make in India. So how do you make in India, as Prime Minister has been saying? You not only make in India, he's been saying make for the world. Right. And as the story mentioned a while back, how we were importers of mobile phones, and today now we are one of the biggest exporters. Even phones like Apple phones are being manufactured in India. So, and as you said, the entire value chain and the changes are also happening, and like we have also talking about solar, as we talked about some time back. So solar panels, when we are talking about schemes, we are promoting domestically manufactured solar panels. We are not talking about solar panels imported from China. So we are taking steps so that we have our own domestic capacity to deal with these kind of new initiatives. Right. Look at the oil prices. Crude oil prices declined today as expectations that US interest rate cuts could be delayed capped gains, though upbeat Chinese trade data augured well for demand in the world's top oil importer. In intraday trade, Brent crude was trading at $82.28 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $78.49 per barrel when reports last came in. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना आज 232 रुपए की तेजी से 65,410 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. हालांकि मई महीने के वायदा कारोबार में चांदी 70 रुपए टूटकर 74,068 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. Thank you so much, Siddharth, for coming on to our program. And now, listeners, before we close, a look at the headlines. Benchmark indices end at fresh record highs. Sensex settles at 74,119. Nifty near 22,500. Union Minister Ashwini Vaishnaw says government to focus on manufacturing in the next 5 years as it has huge employment potential. And India will have 100% efficient green ports in the next 5 years, says Ports, Shipping and Waterways Secretary T.K. Ramachandran. And that's it in today's program. Namaskar. एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है. 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है. किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं. सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस. अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है.
Market Week.